चला लो। मैं उधर ही अरे सामने से 1 मिनट दादा दे दो ना, वो पहन लेंगे। मेरा सर अपने आप में हेलमेट है।
बहुत आगे निकल आए हम लोग। हाँ हाँ हाँ, साइड में रहना, आने दो उनको।
कैसा लगा ट्रैवल किया आपने रियल मुंबई में लोकेशन? चलो 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 भाई Can we have a picture together, sir? Sir, can we have a picture together with the bikers? Sir, sir. Anupam, one picture with the bikers. Sir, 1 second, sir. Sorry. Neena ji, hi. One picture together, sir. So one nice picture. Look at me. Thank you. Bhai sahab, पीछे आओ. Sir, look at me na sir. One sec. Sorry. Nargis little ahead. Thank you. One picture. Thank you. Welcome, sir. And of course, now we go to the cast. Yes, ladies and gentlemen, please again keep roaring. This is for Sharib Hashmi. And the very beautiful, this is the beautiful, beautiful beauty. This is Nargis Fakhri, right here with us. And now, ladies and gentlemen, she never grows old. This one is one charisma, or what may I say, that beauty forever. Ladies and gentlemen, Neena Gupta. And now, in fact, for all the students right here, including me, I want to introduce the next cast here, who is a very important and integral part of the movie. Without him, this movie was not there. Also, he happens to be our guru. But ladies and gentlemen, this is talent powerhouse. He is versatile. And let me tell you, he's a legend but does not want to be called as a legend. Ladies and gentlemen, great pride as a student to be calling Anupam Kher. And can we have mics for them? So my first question, actually, are we ready? Are we good enough to go, or do you want some time to breathe? Do you want some time to actually sink in the trailer? How does it feel? Nice? Very good. Okay. I've been breathing for the last so many years. Okay, I actually have my first question. I'm going to come here so that, you know, I can talk to... I have my first question to the director here. Yes. Sir, आपने बहुत एक hit series बनाई, which is your Metro Park, right? So, and this is a very well-acclaimed series. Tell me,
Was it difficult to actually cast them together? What actually made you feel that you have to cast all of them together? What was the inspiration? I should say I'm just plain lucky that the whole thing happened. When I initially had the idea in my mind, I had drawn a poster by hand, just for an inspiration. I put it up on the wall, and I looked back at the poster maybe after a year later, and they exactly look like Anupam sir and Neena ma'am. So it was all destiny. Somewhere it was supposed to happen, and both of them got together and joined the film, and we had a nice crazy ride with it too. So you have beauties, you have brain, you have talent, you also have brown. May I know how will you bifurcate all of them? Who is the beauties, who is the browns, and who is the brain and the talent here? It's loaded with talent and beauty. So this has been an amazing ride, especially for all of us. It's been a long journey, as Sir was talking about, but we are really excited for you guys to see this and be part of the journey. Congratulations, the trailer is out and it looks amazing, and I can see your hard work here. Thank you so much. Well, now for Anupam sir, आपके साथ तो बहुत मैं अभी भी बता दूं, अभी भी हर स्टूडेंट नर्वस होता है अपने गुरु के सामने. आई एम ऑल्सो नर्वस. सर जरा संभाल लीजिए मुझे आप. ओके सर, आप तो बताइए. पहली बात तो ये पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है. लुक्स लाइक ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत वर्कआउट किया है. रियली बहुत वर्कआउट किया है इस फिल्म के लिए. First of all, thank you, and I must acknowledge my students who are here. Well, I'm thankful to all of you who have come here. In fact, we have invited you, but to just give you an experience, and the biggest, most amazing moment for me will be when they will be sitting here and I'll be sitting in the audience. Oh, this is so nice. Thank you so much. Thank you. This is a very special film. Everybody says a very special, but this is a very special film because when you get movies and when you get roles which make you go beyond your boundaries, beyond your horizons, that's where a person who has done so much work challenges himself or herself for that matter. Shiv, Shastri, Balboa challenged me not only in my mental space but also in my physical space. Even though I am not playing a boxer in it, but he has the mentality of boxer in it. There's a very famous quote which says it's not important to fall down, it's also important to get up, to rise. I'm very moved by this event today because it's very important to make films which you believe in, but it's also very important to make films which run, because at the end of it you may make film for your own personal stimulation, but it's very important. That's why people like Neena and Nargis and Sharib and we have done work for years, at least me and Neena, and now we finally got this recognition. मेरा छोटा सा फेस होता था 35 साल तक एक पोस्टर पे, नीचे कहीं ऐसा करता हुआ एक चेहरा. And after 38 years in the movie business, I'm finally on the main poster along with my heroine. That's, I think, the great achievement, and that you can achieve only with hard work, not necessarily with stardom. Because hard work stays with you, वो आपके साथ रहता है. स्टारडम आती है. मेरे 37 साल के करियर में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, मगर हम अभी तक बरकरार हैं, बिकॉज हमारे अंदर शिव शास्त्री बलबुआ की स्पिरिट है कहीं ना कहीं. फैंटास्टिक सर. सर मैंने एक्चुअली आपके एक इंटरव्यू में भी सुना था, जो अभी आपने कहा कि आप इतने लंबे करियर में आप हमेशा एक छोटा सा अंग रहते थे, और इस टाइम एक्चुअली आप लीड जैसे एक पूरा एक हीरो जैसे बाहर पोस्टर में नजर आ रहे हैं. ये बात आपने अपनी मम्मी से शेयर करी? क्योंकि आप इतनी सारी पोस्ट करते रहते हैं अपनी माँ के बारे में. मेरी माँ ने कहा तेरे को पोस्टर पे आने के लिए नंगा तो नहीं होना पड़ा ना. नहीं, I think it's wonderful to come into this theater and see posters of all of us all over the place. It's a very humbling feeling at the end of it. It means people. That's why I said to everybody not to call us legends. This is a newcomer. It's rebirth. It's very humble, sir. Yeah. Only No, I mean somebody it. who has worked so much can actually say. No, I this. mean it. I think it's. नीना जानती है और हम जानते हैं. हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, ये मेरे से 1 साल जूनियर थी, हमने कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ हम मुंबई में आके धक्के खाते रहे और फिर काम मिला, फिर ऊपर उतार चढ़ाव हुआ, और आज मुझे बड़ा गर्व है अपने ऊपर और मेरे इस पूरी टीम के ऊपर कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर पहुँचे. And that's very gratifying. Very nice. So you are an inspiration for all of us. And और अभी इस क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ
एंकर बनिए, मेरी स्टूडेंट नहीं है अब आप. अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मुझे ऑर्डर आ गया यहाँ से. ओके सर, बट स्टूडेंट ऑल योर लाइफ सर. Of course, that you will be. I'm very proud of you. Thank you, thank you. Well, now let me ask the beautiful Neena Gupta right here. First of all, can you share a little about the film, the trailer that you just see? How do you feel? For me, always, whenever you make anything, you write a novel, you make a documentary, you make a film, मुझे लगता है हमेशा उसमें उसे कुछ कहना चाहिए लोगों को, उसमें कुछ मुद्दा होना चाहिए, उसमें कुछ बात होनी चाहिए जो लोगों तक पहुँचे, लोगों को लगे. और मैंने बहुत सारे ऐसे काम देखे हैं जिनमें बहुत प्रीची तरह से बताया जाता है. शिव शास्त्री बाल्बोआ की सबसे विशेष बात यह है कि हंसते खेलते हुए एक बहुत बड़े टॉपिक को डिस्कस किया है ना अजय. वो टॉपिक जो बाहर के मुल्कों में रहने वाली मेरे जैसी एल्सा जैसी औरतों के साथ होता रहा है, उसको ऐसे टैकल किया कि पता ही नहीं चलता. खेल खेल में बात में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं. मुझे लगता है वो इस तरह की बात जब कही जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है. थैंक यू जयन, आपने इस तरह से ये फिल्म बनाई कि मज़ा भी है, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, रोमांस भी है, रोमांचक भी है. तो इसमें सब कुछ है, ऐसा मुझे लगा जब मैंने देखी. मैम, आप इसमें तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. थोड़ा सा कुछ सर ने कुछ रिसर्च करने कहा, या व्हाट वाज योर इनपुट दैट मस्ट हैव गॉन टू प्ले दैट तेलुगु कैरेक्टर? बिकॉज आई कैन सी दैट आपने डायलेक्ट भी वैसे पिकअप किया था. हाउ व्हेन सर भी कर रहे थे. हाउ तो बड़ा आसान है. जैसे मैंने एक छोटा सा उसमें बोला, मैं एल्सा, मैं अमेरिका में रहती, तो ये इतना सा है ना बोल के तो वो फ़र्क हो जाता है. सो हमारे यूनिट में एक लेडी थी जो साउंड कर रही थी, वो वहीं से थी, हैदराबाद से थी. तो मैं हर लाइन बोलने से पहले जहाँ ऐसा कुछ होता था उनसे बोलती थी प्लीज़ एक बार बोल के बता दो, और फिर वो उसको करती थी. लेकिन हमने बहुत ज़्यादा लहजा नहीं किया है, हल्का हल्का टच दिया है, तो आप समझ जाते हैं कि भाई ये वहाँ से आई है. और मैम, एक चीज़ मुझे पता चली है कि आपको एक बहुत स्पेशल नाम से इस मूवी में बुलाया जा रहा है. चीयर्स लेडी, चीयर्स लेडी और चीयर्स लेडी ना, आपके Cheers. पोस्टर के पीछे लिखा है चीयर्स. चीयर्स. व्हाट इज दैट अबाउट, इफ आई कैन नो? नहीं, इसमें नहीं है, आपके पास सोलो पोस्टर में है. Cheers girl, cheers lady. What is that? If my audience wants to know. मैं ये नहीं बताऊंगी अब. अरे मैं बता देता हूँ. अच्छा. फिल्म में नीना जी को वोडका बड़ी पसंद है फिल्म में, तो इसलिए वो चेयर गर्ल नहीं है, चेयर्स गर्ल है. That's it's a very smart. मुझे लगा ये हम वो रखने वाले मिस्ट्री. अबे ट्रेलर में बोला क्या पी रही हूँ वोडका. एक बार पिया है, पिक्चर में तो बहुत बार पिया है. No. But I must acknowledge the efforts made by our people who made the posters. I think that they've done a great job. Yes. No, I think all you guys in together in sync look very nice on the poster. Without you all, not at all. Okay, now I'm actually going to go to Nargis here. Nargis, first of all, welcome, and you're looking very nice in the film. You actually are beautiful and pleasing. You have a pleasing personality. Do you think if you can just tell us your experience while working in the film? I mean, I had a wonderful experience working with these two, and when you guys see the film, you'll know why. It's a great adventure. So I'm really blessed to be a part of it. This was something very different for me. Exactly. I know you say Exactly. I'm very pleasing looking, Yes. and I always try my best, but I feel like I'm evolving. Trying to make a change. What's the word? Reinventing myself. Oh my God, I can That's a actually good see word, that. right? So I really enjoyed playing my character. I think that yes, I'm pretty, but there's a lot of acting there. I wish I could also say that yes, I'm good looking. I'm gonna take the. Reinventing. Listen, I can't say no. I'm not good looking. No, I have to. Yeah. Was there any inhibition that you actually took off you were looking very plain Jane? Was there any inhibition that No, not at all, because I'm getting into character. When you're acting, you gotta be whatever you gotta be. That's the job. You gotta do what you gotta do. So I really enjoyed that, and it was very interesting because, it was
a very lovely role. These two are the main, and you know, having this role, being a supporting actor it was a joy, and it's something different for me. And it's a different kind of movie. It's very realistic. I love the way it was shot and written, and all the acting was so real. So I enjoyed this role a lot. Whether like big or small, this role had such an impact. And I think our, like, whatever, like, I don't know, when they'll know, they will know. Our support was really important. I think we helped to bring a lot of spice. Along with all your spice, we bring the extra spice. You are the spice Yeah. of the film and we are the life of the film. Yeah, okay, cool, I like that. And my friend Satish Kaushik has come now. And He's yes, the- welcome. एक बात मैं कहना चाहूँगी नरगिस के बारे में कि ये इतनी प्लेजेंट है, सेट पे इनके आने से एक खुशी का एटमॉस्फेयर हो जाता है, बहुत प्लेजेंट है, हैप्पी, खासकर लड़कों में। हाँ? ये एक ऑनेस्ट क्या दिल बोलना से चाहते हो? दिल से जवाब दिया है शाहरुख ने। ना शी इज वेरी प्लेजेंट, हैप्पी, कुछ क्या मन में कुछ और नहीं है, जो है सामने है, वो मुझे लगा इनके साथ काम Yeah, करके। she's very amazing, positive Yeah. energy. Yeah. She's beautiful as a person also. Thank you, thank you. So Nargis, was it how difficult was it to work? You know, you're working with some powerhouse, like talent powerhouse here, and was it like something? What did you feel any kind of hitches, any hurdles when you? What did you prepare? So I am so happy to work with both of you, as you are. I know you don't want to be legends, Of course. icons. But they are, but they don't want to be called. They don't want to be called. Yeah. It was great because you always helped me, and I really appreciate that. And you know, sometimes you get lucky, you do get to work with people that help you. But you know, he's an amazing teacher, I'm sure, because on set he would help me a lot. And So you got practical lessons. yes, you know, he would be a teacher for, I guess, like a guru as well. I really like appreciate you letting me know if something, whatever, or you would say something in a way to help me change something. So yeah, he was my teacher also, not only my co-actor, which I love that. Thank you. Sweet, so Thank sweet. you, that's very, thank you. All right, now going up to the Urdu and the Hindi dialect master, of course, we have Sharib Hashmi. Ladies and gentlemen, can I hear it for Sharib? So Sharib, बहुत सारे फैंस यहाँ पर आपके एनीवेज हैं, बहुत पूरी दुनिया में हैं, हमने बहुत सारा आपका काम देखा है। मेरी उर्दू हिंदी भी करेक्ट कर देना, उर्दू तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, हिंदी ज़रूर करेक्ट कर देना। मगर ये बताइए कैसे लगा आप इस फिल्म में हैं? आपको हमेशा हमने एक अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, यू नो, यहाँ पर थोड़ा सा इनलाइटन कर सकते हैं? यहाँ पर भी जो जितना आपने ट्रेलर में देखा होगा, काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने कभी ऐसा प्ले किया नहीं है। मेरे लिए तो बहुत कमाल की जर्नी रही है। अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला, नीना मैम के साथ काम करने का, मतलब ये मैं कब से चाहता था कि ये हो, और फाइनली इस फिल्म के ज़रिए एक सपना पूरा हुआ। थैंक यू अजयन भाई फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पार्ट। और जब इन्होंने फ़ोन पर बोला ना कि हम मतलब ये टॉकिंग टू नरगिस ऑपोजिट यू, क्या मुझे नरगिस कौन कौन नरगिस तो मुझे तो काफ़ी टाइम तक यकीन नहीं हो रहा था। जब वहाँ पहुँच गए तभी भी मुझे यकीन नहीं होता। व्हेन शी केम ऑन द सेट्स तब मुझे मतलब भरोसा सच हुआ नहीं कि बोल रहा, ये बहुत सच नहीं बोल रहा है। ये नीना मैम की खासियत है। अरे तो ऐसा लगता था ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। Oh, so For basic. that the credit goes to her. इसने उनको इन्होंने उसको at ease किया। At ease किया, absolutely. By being herself. Thank you so much, Nargis. So Sharif, you're also playing a Punjabi character in this. Anything, because हमने you know सुना आपके बहुत सारे characters जो आप evolve होते आए हैं as an actor, और हर character को आप you know audience ने बहुत पसंद किया है आपको। ये character के साथ हम क्या expect कर सकते हैं? इस कैरेक्टर के साथ में बहुत मस्ती है, बहुत फन है और काफ़ी प्यार है, बहुत लवेबल सा कैरेक्टर। पंजाबी में बोल के दिखा दीजिए। चलिए। इतनी पंजाबी तो सानू आंदी नहीं है, बट आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जो मेरा कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है सिनेमन सिंह, जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह। तो वो गाना वाना भी गाता है, मस्ती भी करता है और पेट्रोल पंप चला रहा है, और खुद अपना एक म्यूजिशियन का स्ट्रगल भी चल रहा है साथ में, तो मज़ेदार है। तो सेट पे आपको अगर जैसे हम अभी भी यू नो अनुपम सर से बहुत डरते हैं,
कुछ ऐसे था डर का कैसे मतलब जैसे आप पहली बार जब स्टेज पे गए तो हाउ वाज द फीलिंग यू नो टू वर्क अरे यार इनसे कौन कैसे डरेगा यार, इतने क्यूट इंसान है। हमने इतनी मस्ती की है। ये बुलवाना था मुझे कि क्यूट इंसान है, हाँ, यही बुलवाना था मुझे तो मैं मतलब आई वुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स एंड जब अनुपम सर के साथ में सीन होते थे तो मजा आ जाता था। मैं तो बहुत डरती हूँ उनसे अनुपम सर। Any thing you know I mean if I can know from you Ajay sir that is there some good memories attached if you can just share with us while filming the film कुछ मजेदार किस्सा कुछ हुआ जो आप share कर सकते हैं? Yeah, there was lots of. We had it was a very small crew, and we shot it in New Jersey. So it was almost like family, you know. There were only like 30 to 40 people in the crew. So one of the things what happened was. I don't know, sir, ma'am, if you remember, we had the scene on the bench, which is one of the important locations of the film, where you sit down, and sitting opposite, there was a big crowd of people, you know, which is very rare in which happens in US. So people were coming, bringing their camping chair. There was camping happening, and they were watching the shots. And whenever the shot happens, they would say excellent, and they would start clapping. So my job now, I can't say anything. I can't go back and say, sir, one more shot. Retake one more, because audience ne bol diya. I'm like. So we had so much fun filming this, and Sharif's character too. It's a very, I keep telling him, it's a very tricky character to play, because if you go one notch up, it could be a caricature role. So he had played it exactly on that perfect note. So he has done an amazing job to just like all of them. I think also, I'm glad you reminded that it was a very small unit, about 30, 34, 35 people. We had a very good producer team. We had Kishore Variat who produced the film with Ashutosh and Anita, and they were like food suppliers also to me. Ashutosh used to cook food for us, who was our producer, and we खुद बना के इनको अपनी बीवी के खाने पे इतना यकीन नहीं था, तो वो खुद बना के खाना खिलाते थे। और हर शूटिंग में कोई भी इंडियन फैमिली आती थी, आज आपके लिए क्या खिलाएं, क्या लेकर आएं। तो I think any film which has on-set vibes which are warm and happy and pleasant, that gets translated into films also. I always believe that. Well, I can see that.